Hello students, how are you? I hope you all are fine. So let's start the class without any delay. So this is your Simulink tutorial and today we are going to develop model number 1, that is we are going to simulate our sinusoidal waveform and we'll be able to see how it can be connected to the MATLAB platform. Okay, so let's begin and for this I'm going to share my screen with you all. I hope my screen is visible to you. I have already opened this Simulink screen. In the previous class, I have shown you how to open your Simulink screen and how to move your elements or the blocks from the Simulink library that I have already shown in my previous class. So you can, I will also share my link for this so that you can also see that video again. Okay, if you have any query how to um, drag your blocks from the Simulink library. So let us start and how to save your model. Okay, let's begin. This is your Simulink library browser and I'm double clicking on it so that a library set of blocks has been opened. So this is your library and today we are going to generate, display and export source, that is your sine wave, and we are going to tune its parameters. And definitely after this class, you will be having enough confidence in selecting your blocks from the Simulink library. You can add up and view your two signals in the Simulink. You can also generate your sinusoidal waveforms and able to tune its parameters. You can also change your model configurations and you can set its tuning time. जो जिस level के आपको tuning करना है, that you can be able to do even after this class. You can export a variable into the workspace and you can also plot it. That command will see how to plot your waveform in the MATLAB. And you can also have the confidence to magnify your signal with a gain multiplier. So let's start. For this, I'm going to select source, that is your sinusoidal waveform. So I'll be selecting this source. Yesterday in the previous class, I have shown you कि कैसे आपको blocks को pick करना है from the different library. So I'm going to generate sinusoidal waveform. So I have to choose this sources library और ये sources वाले library पे जब मैं click करूँगी तो right hand side पे I'll be having different sources available and from here I have to choose this sine wave. What I have to do, I have to just select it and drag on my untitled screen. Yeah, so this is your sine wave. Let us move to this end and I can also increase its shape. मेरे को इसका shape बढ़ाना है तो just simply select और drag कर दीजिए as per your need. I have also shown you how to make multiple copies. I want more sinusoidal waveform. So what to do? I need to just right click and drag. So what I need to do, this is here, right click and drag. Next, I want one more signal. So again, I am dragging it. Okay. How we are going to set its configuration parameters? I have told you I have to just double click. So block parameters जो भी हैं इसके, that you can see here, it is having one amplitude and I'm okay with it. So I'm not going to change its amplitude here. So I have taken one amplitude, frequency is 1 radian per second. So this is okay. So I've just okay. Second waveform में if I want to change its frequency क्योंकि मेरे पास 3 waveform है and I want to see on scope, so I want to just change its frequency and I'm selecting here just 5. So I am having this 5 radian per second. Apply. Okay.
For this waveform, I'm having change. I want to change the frequency, having 10. Any frequency you want, you can select apply and OK. Now, after changing the frequency, I want to view all these sinusoidal waveform on the display unit. And for display unit, I have to move to the library again. And display के लिए हम use करते हैं Sing, जहाँ से हमें इसे देखना है. So I'm using the scope, just selecting and drag. So the scope setup has been available. Increase its size. Now simply आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि simply बस उसे drag करना है और connect करना है. The MATLAB SIMULINK already understands कि where it has to connect. अगर ये red line आ रही है, that means it is not connected properly. So what to do is just simply arrow mark से आपको select करना है और इसे connect करना है. Black line show कर रहा है, yeah, it has been connected. Next, what to do here? ये आप देखिए यहाँ पे we are having the 3 input signals. That means we are having 3 sinusoidal waveform and we want to see all the waveform on my scope, but the scope has only 1 input. So what to do now? I have to just double click. A dialog box is open. और यहाँ पे देख रहे हो we are having only this setup. That means this is one scope you can be able to view. So what to do here? I am moving on simulation. एंड यहाँ पे आप अपने सिमुलिंक मॉडल का आपको कितना वेवफॉर्म देखना है दैट यू कैन सी. तो व्हाट टू डू हियर? आई नीड टू मूव ऑन दिस लेआउट. आई वांट 3 सेटअप, 3 डिफरेंट सेटअप फॉर माय दिस. एंड व्यू के लिए आप मूव ऑन करेंगे व्यू पे. नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज पे. नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स कितने चाहिए? हमें 3 चाहिए. So we want 3. Okay. So you are having 3 scope available on single scope. That means 3 input are available और तीनों inputs का आप waveform एक ही scope में देख पा रहे हो यहाँ पे. So let us connect all the sinusoidal waveform to the scope. It will automatically adjust. It's so simple to just connect it from the scope. ये ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर लेता है और आउटपुट वेवफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो जाता है. तो लेट अस सेट इट. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट टू डू? वी वांट टू सी द आउटपुट वेवफॉर्म. सो व्हाट टू डू? यू हैव टू जस्ट सेव इट. बिफोर रनिंग you have to just save it. I have to give its name. So this is my model 1. It will ask you where you want to save. The untitled will change to model 1, whatever name you have given to your assigned model. So this is my model 1. Now after saving, this is the symbol for your run of your Simulink model. जो भी आपने मॉडल बनाया है उससे रन करने के लिए हम ये वाला ग्रीन दिख रहा है आपको. ग्रीन सर्कल में एक एरो मार्क है. दैट इज फॉर योर रन of this model. So I am applying running, clicking on this run. It is initializing, taking some time to run, and it is showing ready. Ready means now you can see your results. I'm double clicking on scope and you can see the waveform you have generated. So I have chosen the 3 sinusoidal waveform of different frequencies. As in the first, you can see this is of frequency 1. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो नंबर ऑफ आपके साइकिल हैं वो कम है. सिमिलरली इफ आई हैव चूजन फॉर साइनसोइडल वेव 1, मैंने साइन वेव 1 के लिए चूज किया. सो आई हैव चेंज द फ्रीक्वेंसी टू 5 रेडियन पर सेकेंड. सो यहाँ पे आपको वेव फॉर्म थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं. और जब हम साइन वेव 2 में जा रहे हैं, सो एज यू हैव मोर क्लमजी वेव फॉर्म because we have changed your frequency to 10 radian per second. Okay, but there's an issue that we have given the sine wave, but on the scope we are not getting this pure sinusoidal waveform. So what to do now? So this is just
You can change it from here, the configuration, that is your model configuration parameters. So you have to just click it. This dialog box will be open और यहाँ पे जो solver है that ये solver का जो भी parameter setting है that is showing, तो we'll move on additional options और यहाँ पे आपको दिया हुआ maximum step size. सो दैट स्टेप साइज ये बाय डिफॉल्ट है, आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो. बेसिकली फॉर हैविंग हायर रिजोल्यूशन वी आर चूजिंग दिस as 0.01, so we'll be having more resolution of my waveform. Now I have just changed the maximum step size जो auto लिखा हुआ था, I have changed it to 0.01 to increase its resolution. I am applying it and click OK. Save it and run. Let's see after this ready confirmation, I'm just clicking on my scope and you can see on the scope that you are having a sinusoidal waveform now. Okay, so this is our first task that we can be able to see our sinusoidal waveform on the scope, and we can also see how to change the model configuration parameters. Next, if you want to add these signals, मुझे इसे add करना है, क्या करना पड़ेगा? I have to move to the library and I'm going to use addition blocks जहां से मैं इस waveform को add कर सकती हूँ. तो I have selected this commonly used blocks जो कि mostly add on होते हैं. तो यहाँ पे आपको कहीं move on हो रहा है, as you can see here. Simply we have to just add it. As you can see it here, sum. Sum means you can add the waveform from here. So this is your sum blocks. Just I want to increase its size. So let me just drag it. Okay, now connect these, but as you can see it here, there are two plus signs. So what to do? I'm having the 3 input और मुझे तीनों waveform को add on करना है इस summation में. So क्या करना पड़ेगा? I have to just double click this sum block and this block parameters dialog box has been opened और यहाँ पे आपको mention है list of signs. 2 signs means it is available for 2 inputs, and if I want to increase the input size, so what to do here? I have to just simply add one more sign so that I'm having the ability to add all the 3 signals. So यहाँ पे आपके पास 3 arrow marks आ चुके हैं to connect your input here. So just what to do here? You need to just simply drag and connect from the respective sinusoidal waveform. जब तक ये ब्लैक नहीं होता, ये लाइन कंफर्म नहीं करेगा कि आपका ये सिग्नल सेलेक्ट हुआ है या ऐड हुआ या प्रॉपर कनेक्शन हुआ है कि नहीं. जैसे ये ब्लैक हो जाएगा, दैट मीन्स द कनेक्शन बीन डन करेक्टली. Similarly, I want to connect the second signal, second sinusoidal waveform, and the third waveform. Next, I want to see the additive signal on my scope. So I have selected the scope here. I'm going to increase the size of scope. यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो I want only one input to fetch to this particular scope, so I'm not going to increase the input signals for this particular scope. So I'm just simply connecting this. Okay, after having the signal, let us save this model, run, ready, and now you can double click this. What is happening here? Here we can see that all the 3 sinusoidal waveforms are
added here in the simple scope. आप एक स्कोप में देख पा रहे हो तीनों वेव फॉर्म को ऐड करने के बाद तीनों का मैग्नीट्यूड जो एम्पलीट्यूड था दैट इज ऑफ 1 एम्पलीट्यूड और एडिशन करने के बाद आपको 3 मैग्नीट्यूड जो आपका आ रहा है दैट इज फॉर नियर अबाउट 3 amplitude. So after addition of all the 3 waveforms, you are having the output at the 3 of amplitude 3. So this is after the addition of all the 3 sinusoidal waveforms. So you have seen how to add up all the signals. Next, if I want to amplify my signal, अब मुझे amplify करना है. So what to do now? So for amplify, I need to switch on my library and amplify के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे सिग्नल की स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है इंक्रीज करना है तो I have to use my amplification and that is your gain. So this is your Simulink commonly used blocks में आपको एक gain available होगा और इस gain block से I can simply amplify my signal or I can increase the strength of my signal. So what to do here? As I want my gain to be here, so क्या करना है आपको simply इसे drag करना है और यहाँ पे आप लेके जाएंगे. It will automatically adjust itself as per the connection. आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा ड्रैग एंड ड्रॉप करने में भी कि आपको प्रॉपरली लाइन से कनेक्ट करना है नहीं हो रहा है देयर इज नो ट्रबल इन कनेक्टिंग दीज ब्लॉक्स इन द मॉडल एज इट इज सेल्फ एडजस्टेड तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है अपने आप को तो आप देख पा रहे हो आई कैन ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ माई दिस joining connection. Okay, next I want to increase the gain of this block. मुझे इसकी strength को बढ़ाना है तो what I need to do? Double click. I want to increase the gain. मुझे इसकी gain को बढ़ाना है 7 times. If I am choosing 7 times, so what to do? I apply. Okay. ओके सो गेन की स्ट्रेंथ जो भी आपके सिग्नल्स आए हैं ऐड होने के बाद एम्पलीट्यूड आपका 3 था और मुझे उसे और स्ट्रेंथ बढ़ाना है उसके एम्पलीट्यूड को तो आई हैव जस्ट इंक्रीज इट्स गेन अब मुझे उसे व्यू करना है तो आई हैव टू सेव रन पहले आप मॉडल को सेव करेंगे देन रन रेडी आ चुका है वी कैन व्यू द सिग्नल व्हाट इज हैपनिंग हियर ऑलरेडी द सिग्नल वाज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 जब ये समेशन ब्लॉक से बाहर निकला था तो इट इज हैविंग अ 3 एम्पलीट्यूड और हमने 7 टाइम्स और मल्टीप्लाई किया एम्पलीट्यूड को इट इज नियर अबाउट 21 एम्पलीट्यूड हैविंग सो एज यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ योर वेवफॉर्म नाउ आफ्टर एडिंग द गेन टू आवर एडिटिव सिग्नल ओके नेक्स्ट मुझे दो सिग्नल को ऑब्जर्व करना है लाइक आई वांट टू सी माय सिग्नल आफ्टर द गेन एंड बिफोर गेन सो व्हाट टू डू नाउ ये तो आफ्टर गेन आ गया मुझे एक स्कोप और चाहिए तो आई एम राइट क्लिकिंग दिस एंड जस्ट क्रिएटिंग वन मोर स्कोप एंड आई वांट टू कनेक्ट दिस स्कोप फ्रॉम ब्लैक लाइन ये शो कर रहा है कि आपका कनेक्शन हो चुका है ओके कनेक्शन हैज बीन डन तो मैंने क्या किया ये जो भी आपने सिग्नल को एड ऑन किया था आफ्टर एडिंग विदाउट एम्पलीफाइंग दिस इज द स्कोप टू सी एंड दिस इज द स्कोप टू सी आफ्टर एडिंग गेन टू योर सिग्नल नेक्स्ट स्टेप इज टू सेव एंड रन रेडी डबल क्लिक so here you can observe that the amplitude is 3 just after adding all the signal summation block के बाद का result है ये तो आपको 3 दिख रहा है लेकिन जब आप इधर move on करेंगे तो you will be having the amplitude is of near about 21 which is the magnifying signal ओके नाउ मुझे ये दोनों सिग्नल को एक ही स्कोप में देखना है मतलब इट इज क्वाइट इजी कि एक ही स्कोप में आप दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हो किसी भी टाइम इंटरवल पे so I want both the signal to see in the single scope next what to do here basically the term or the block which is used for seeing दोनों स्कोप के रिजल्ट को मुझे अगर सिंगल स्कोप में देखना है तो आई विल move to commonly used blocks here I will be having a mux that is your multiplexer which is
यूज टू सी द टू स्कोप रीडिंग और मल्टीपल स्कोप रीडिंग को आपको यहाँ पे सिंगल स्कोप में डिस्प्ले करेगा आपके रिजल्ट्स को। तो लेट अस सेलेक्ट दिस मार्क्स as number of inputs I required 2, so I'm not going to change the input. What to do here? I am simply connecting the amplifying waveform and before amplifying मैंने simply दोनों को connect किया and I want my scope, select, right drag, right click से आपसे drag करेंगे, अंदर copy is ready, simply connect it. Black line shows, a black bold line shows your connection has been done. Save and run. Here you can observe here that the two waveforms it is showing that one is after the amplifying, जब आपने इसे amplify कर दिया gain के साथ तब आप उसका magnitude देख सकते हैं, और this is your before amplifying the signals. Now you can compare it in any interval of time. So this is your the beauty of the Simulink model or the Simulink platform, that you can readily observe your output within seconds. Simply just drag and drop from the library, just place it here, place in the line where you need to connect. It is simply adjusting, तो सेल्फ एडजस्टेड नेचर है ब्लॉक्स का, और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके आपको डिस्प्ले कर रहा है आपका रिजल्ट. Okay, so we have seen till now कि how to add your waveforms, how to make your single scope जहाँ पे हम दो तीन रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. Next, one more step we want to see here, like we want to connect this from the MATLAB. This is your Simulink model है और मैं इसे MATLAB में देखना चाह रही हूँ. तो what to do? For this, I'm using this waveform where I can simply connect to the workspace. So sync में आप move on करेंगे और sync में you have this option that is your this block is available, that is to workspace. So I'm simply selecting it. I want to change its name. Sim out की जगह I want to name it sum underscore out. जो भी summation है that I want to see. Apply. Okay. So उसका नाम change हो गया. That is sum out. Where it was sim out. तो मैंने इसे summation block के साथ मुझे इसे connect करना है and I can see my इसे मैं connect कर रही हूँ this summation output के साथ. Save कर रही हूँ. Run. Let's move to the MATLAB. MATLAB का विंडो ओपन है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके पास वर्क स्पेस में अवेलेबल है दैट इज sum underscore out. और जब हम इस पे क्लिक करेंगे सो दिस टेबुलर स्ट्रक्चर हैज बीन कम. जो भी आपका वेवफॉर्म बना है उसका टाइम के साथ डेटा इज अवेलेबल टू यू. दैट मीन्स यू कैन सी कि कैसे हम सिमलिंक मॉडल को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने मैटलैब कमांड में. नाउ मुझे यहाँ पे वेवफॉर्म देखना है जो वेवफॉर्म हमने सिमलिंक मॉडल में डेवलप किया था. एंड फॉर दिस आई नीड टू एंटर द कमांड दैट इज प्लॉट. प्लॉट करना है क्या जो मैंने अपना नाम दिया है दैट इज सम अंडरस्कोर आउट जिसको मैंने कनेक्ट किया है डॉट डेटा से. दिस इज योर डेटा. ये डेटा आपको चाहिए अपने वेव फॉर्म में. सो आई एम एंटरिंग द यूजिंग द कमांड ऑफ प्लॉट सम आउट जो आपने कॉन्फ़िगर आउट किया था अपने सिमलिंक मॉडल से, और मेरे को ये डेटा प्लेस ऑन करना है. तो आई एम जस्ट एंटरिंग एंड यू कैन सी इट हियर जो आपका एडिशन आया था. You can compare.
This is quite wonderful platform to you. You can easily connect with the MATLAB coding itself. आप देख पा रहे हो कि हमने कोड करके भी सेम कॉन्फ़िगरेशन वेवफॉर्म जनरेट किया एंड द सेम मॉडल का हमने कॉन्फ़िगरेशन मॉडलिंग के हेल्प से भी हमने वेवफॉर्म जनरेट किया. तो इट्स क्वाइट इजी और बहुत मजा आने वाला है आपको इस तरह के वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करके विजुलाइज करके. तो ये अभी जस्ट आपका स्टार्टिंग स्टेज है. तो एज यू कैन सी दिस इज सिमिलर वेवफॉर्म जो कि आपको सिमुलिंक में दिखा था और वही चीज हमने प्लॉट कमांड से विद द हेल्प ऑफ योर मैटलैब कमांड विंडो से हमने यही वेवफॉर्म जनरेट किया. और ये जो वेवफॉर्म है वो इस मॉडल का आफ्टर द समिंग ब्लॉक, ये जो समीशन ब्लॉक आपने किया था उसके बाद हमने इसे कनेक्ट किया वर्कस्पेस से, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है. हमने यहाँ पे एम्पलीफायर के बाद का वर्कस्पेस नहीं लगाया है, कनेक्शन नहीं दिया. अगर आप इसके बाद का लगाते तो यू कैन बी एबल टू सी दैट वेवफॉर्म ऑन योर मैटलैब स्क्रीन. So I hope you have enjoyed the session till now and definitely you have learned something lot like your beginning session for this Simulink. So thank you all.